शांति। ओम शांति। Namaskar. Swagatam. We would like to welcome you all on our 510th milestone of brainstorming, knowledge sharing, and inspiring to the next. IRES AYUSH SAMRIDDHI is absolutely non-commercial platform, and definitely this platform is dedicated to you all experts. I am grateful to Dr. V.K. Agnihotri sir, Sudhakar Reddy ji, Nishant Shukla ji, Ved Vyas ji, today's speaker. So thank you very much again. Public will join definitely. As this program is live on YouTube, so we have reduced the number of direct involvement, no doubt. But this message is clear and spreading all over the world, because with us, more than 20 countries are associated now within this journey of 2.5 years and 510 webinars. Moreover, we are celebrating every day with our AYUSH, and today is International Anti-Corruption Day. How that day can be related with the AYUSH? That was a great challenge before us, but God has given the way. And SADAVRITTA, if anybody will follow SADAVRITTA, our leaders, our public voters, our executives, bureaucrats, if everybody will follow SADAVRITTA, there will definitely be no chance for any corruption. So this is my theme. Now I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for his initial welcome. थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी, थैंक यू, नमस्कार हमारे सभी आज के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए। Your voice is less, sir. Okay, I'll just increase. So thank you, Professor Pawan Sharma ji, and I welcome all the distinguished guests and the big dignitaries who have just joined our platform. बड़ा अच्छा सा विषय आपने बताया और हमारे पास स्पीकर विषय से अच्छे हैं, हम यही कह सकते हैं, विषय अच्छा है और हमारे स्पीकर्स विषय से अच्छे हैं। पॉइंट ये बनता है कि अगर हम वर्ल्ड या इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की बात करें और इसको आयुर्वेद या आयुष की दृष्टि से देखें तो बहुत ही समीचीन है कि आपने सदवृत्त का इस पर एक विचार लेने का कहा। प्रोफेसर रेड्डी के दृष्टिकोण से आई वुड लाइक टू से दैट इफ वी टॉक अबाउट द एंटी करप्शन डे, हाउ टू सेलिब्रेट एंटी करप्शन डे विद द हेल्प ऑफ द our Ayush, especially Ayurveda, then no doubt this is one thing which we can be projected, that is SADAVRITTA. So today our distinguished guests are going to throw light over the newer concept and its practical applicability over the anti-corruption. When we go through the verse, we know there is one shloka which comes that Vyattam yatnin sanrakshit. It means there is something which is to be procured or protected by efforts. Vittam ati ayaticha. Finance or money may come or go. So in the reference of vratta, vitta, the vratta is important. So here comes the point that what is vratta, and when it is followed with the previous or prefix sada, it becomes wonderful. So SADAVRITTA itself will carry all the, say, hidden facts by our distinguished guests. So I can simply say that for Jivikoparjan, Dhanoparjan is essential. To live or make a life, we must earn money. But the money must not be earned by the unfair means. हमें धन कमाना चाहिए, लेकिन धन को हमें अनैतिक तरीके से नहीं कमाना चाहिए. This is one first and last sentence this way. So today evening
I, from the side of IRES, welcome you all and especially pay our full respect to our today's distinguished guest, say Professor Sudhakar Reddy ji from JSS College, Mysore, along with Dr. Ved Vyas Pandey ji, Assistant Professor Mahe from Puducherry. So these two guys, they will, the one will, we may not even see in the form of umpire, as they will, they are going to make a wonderful betting on the crease. I'm scared that where they will stop, as Dr. Ved Prakash ji was saying, when Reddy sir will speak, I will be having no time to speak. so I just consoled him, don't worry, you all will be given the equal quantity or equal minutes, say 20 minutes, 25 minutes, and rest we will see. So with these few words, I congratulate you and my greetings are with you, that you please enlighten us with your ocean of knowledge, and we will see that how it is going to make a practical shape in the form of the following or say observance of SADAVRITTA. So this is one thing very important, and it's my pleasure that this day is now having some remedy from our SADAVRITTA department. Thank you so much. Thank you. Over to Professor Pawan Sharma. Thank you. Namaskar. Thank you very much, sir, for your initial blessings and welcome. Welcome, Anand Kattiji. Welcome from Bangalore. Welcome, Dr. Poonam Gupta ji. Welcome from Redmi 9 Power. I am unable to understand who is joined. Welcome. Then also welcome. Thanks, Dr. Parikshit, for support. Thanks. I would like to now invite humbly Dr. Professor Sudhakar Reddy ji, Head of the Department of Swasthya in Mysore Ayurvedic College. Welcome, sir. Welcome. Sir, voice is not clear. No, your voice is okay. All right. I also welcome Professor our Nishant Shukla ji. I'm sorry I missed, though Professor Pawan Sharma ji welcomed him. So he's a very senior person. He's also coming with the generations as Dr. Veda Vyas ji. So it's our proud that we are having his presence, of course, to our platform. Thank you, sir. नमस्कार जी सर, नमस्कार. हाँ, I'm sorry, हम नमस्कार सर. मैंने सोचा मैं बोलूंगा पहले, लेकिन मैं कुछ वो सब्जेक्ट का फ्लो में चला गया. नहीं एक्चुअली मैं मोबाइल नेट से जुड़ा हुआ हूँ और थोड़ी स्पीड स्लो है कनेक्टिविटी की, इसलिए मैं अपना वीडियो ऑफ रख रहा हूँ. हाँ, यही तभी चेहरा नहीं आ रहा, कभी हिल रहा है. कोई बात नहीं, आप बने रहिए. हमारा उत्साहवर्धन रहेगा. यस सर. श्योर. यस सर. नमस्कार. रेडी, आप शुरू करिए. आपकी आवाज आ रही है, वीडियो भी सही है. Sir, am I audible? Yes, please. Yes, sir. Good evening to all. Respected Sharma sir, respected our Agnivati sir, and my dear friend Ved Vyas, and all other dignitaries, including my also good friend Anand Katti from Bangalore. And today, Sharma sir called 3 days back, and he told that you have to speak SADAVRITTA and corruption. It's entirely different subject, because in Ayurveda we have SADAVRITTA, but exactly related to corruption. I don't know how I will be conveying you. And, it is the antidote of corruption. Yes, sir. It is the antidote of corruption. So naturally, we are preventive medicine person. We will have to talk. Yes, sir. Yeah, I will try my level best, sir. And first of all, thanks to Sharma sir and Agnew sir for giving this opportunity. Sir, may I share my screen? Please allow me. It is visible, sir? It's coming, sir. It's not came, sir. Yes, sir. No. It's visible. Visible. Okay. Visible, sir? Yes, sir.
Yes, sir. Okay. Sir, please So, make it full SADAVRITTA to screen combat- and projection mode. It is projection. It is in projection, sir. Yes, sir. Okay. Is it okay, sir? You can go for slideshow, sir, to maximize the size. Sir, it is a slideshow only. It is in my laptop. It is a slideshow only. No problem, we can continue, sir. Okay, sir. Now, let us see what is first corruption. So, corruption in the wider sense includes bribery, extortion, that is called obtaining something through force or threats. So, anything which is forcibly taken by threatening taken, also called as corruption. Fraud, that's called dishonest method to cheat another person of something valuable. For valuable things, somebody will be cheated by another person. That also called as corruption. Carteless, that is called illegal business. Abuse of power, unlawful or misuse. This also comes under corruption. And embezzlement, that is called misappropriation of the funds and money laundering. All this wider sense, it includes the corruption from the bribery to money Your laundering. slide is not changing. You are staying at your first slide. Yes, sir. Now it's, sir, it's changed now. No, no, sir. Wait a Your minute. slide is not moving. Now, sir. No, it's still. Yeah, this is your first slide of introduction. Yes, yes. Okay, okay, I got it. And now you can move. What is corruption? Yeah. Yes, sir. It's okay. Now. No, again, it is the first slide. Yes, sir. What is corruption? Isn't it? Yes, sir. No, no, no. It's not. It's not displaying. Again, it is the first slide itself. The SADAVRITTA to combat corruption. It's an introductory slide. Yes, got it. Now it's fine. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Moving. What is corruption? No, you can. Yes. Perfect. Yes, Perfect. Perfect. Oh, sir. Corruption is an issue that affects all countries around the world. Not single country also left over. Wherever you go in the world, there is a corruption. It can refer to the destruction of one's honesty or loyalty through undermining moral integrity or acting in a way that shows a lack of integrity or dishonesty. So simple meaning that whenever we are going for corruption means you are losing your honesty or loyalty. It also refers to those who use a position of power or trust of dishonesty again. And now the corruption undermines democracy. This is one problem, and it creates unstable governments. It sets countries back economically. So the corruption definitely undermines the democracy. It creates unstable governments and sets countries back economically. And corruption comes in various forms, by bribery or law breaking without dealing with the consequences in fair manner, unfairly amending election process. We are seeing in all over India during election process, and covering mistakes or slicing. That is called those who expose corruption in hope that justice would be served. So all these things. So it comes from the bribery to covering mistakes also. Various forms. There are three elements of corruption that we should understand. There will be three. One is giver, those who are giving the bribe; acceptor, those who are accepting; and a gratification. That is, they may say that it's because of gratification you are giving to us. So these three elements will be involved in the corruption. So when SADAVRITTA comes for the giver, acceptor, and gratification, where we have to give more stress to the SADAVRITTA. And this by resolution 15/4 of October 31st, 2003, the UN General Assembly designated December 9 as International Anti-Corruption Day. Why this decision is aimed to raise people's awareness of corruption and of the role of the United Nations Convention Against Corruption in combating and preventing it. So all over world there is a problem with corruption. That is why in 2003 UN General Assembly designated
December 9 as an International Anti-Corruption Day to raise people's awareness regarding the corruption. And anti-corruption organization all over the world, including India. In India, we have the Prevention of Corruption Act 2018. That's the latest one. It started since 1947 onwards only, but latest one is 2018. So in this law, they says that those who are involved in the corruption, they are investigating corruption. Again, what type of corruption is there, and according to that one, there will be punishment. And again, there is another private sector, that is Transparency International India, is a voluntary organization. Anti-Corruption Foundation, again voluntary organization. All India Anti-Corruption Organization also is there. In the whole world, there is a United Nations Convention Against the Corruption. So these are all working for anti-corruption field. And if we come to Ayurveda in Sadavritta, the significance is there. The principles of Sadavritta is more significant in current era, as there is a ranking of corruption is there, crime is there, terrorism is there, tendency of suicide is there, violent behavior is there, friction in the families. For all this purpose, there is a significance of Sadavritta is there. And decreased human values. Nowadays, everybody, there is a human values decreasing is there. And excessive use of mobiles, indoor games, cut people from society and hampers their social health. That means we are not having the social movement. People are engaged with the mobiles, indoor games, and these people, they are away from the meeting the society. When society we are meeting, there will be Sadavritta comes. If you are isolated, then there will be no connection with the society, and they will be isolated. And there will be, when isolation is there, they will be getting all the Rajatama Guna, and that will be promoting the crime and other corruptions. That's why we need to inculcate, we need to improve the Sattva Guna of the person. The Sattva Guna of the person can be achieved by only following the Sadavritta. So in the anti-corruption, the person should have a Sattva Guna property. The Sattva Guna property will be definitely comes with only following the Sadavritta. Now, healthy mind results in healthy perception. We know very well. Healthy perception maintains the mental health. Healthy mental health maintains the social health. For healthy perception and knowledge, it is essential to indulge in such activities which result in positiveness by any means. For this, we need a Sadavritta. Sadavritta only the option to maintain the mentally healthy. When person is mentally healthy, the corruption definitely will be away from the person. That is why Sadavritta should be followed to have mental health. And Sadavritta, these are the rules and regulations or ethics we can call in modern era, which must be followed by all individuals of society. These ethics have been designed in such a way that it improves the mental health and thus behavior by increasing Sattva Guna in individual, and is beneficial for the society as individual, as unit of the society. We know that the person is a part and parcel of the society. The society, in the society, people will be of different categories, but everybody should have Sattva Guna, then there is no corruption at all. It is necessary of current society, as well all types of crime and corruption are increasing day by day. That's why people should follow the Sadavrittas, so that they will be increasing the Sattva Guna. And now there are 3 causative factors mentioned for diseases, including correction, etc. Ati Yoga, Hina Yoga, Midya Yoga of Kala, Buddhi and Artha. This leads to Sharirika and Manasika doshas. And this Manasika doshas leads to Sharirika and Manasika Vyadhi. And due to all these things will occur only because of Prajnaparada. I can say that corruption or crime or any violent and etc. all these are only due to Prajnaparada. Panchendri, due to Prajnaparada, there will Panchendri Ahita Sevana, Vega Sandharana, Sahasa Sevana, Asuka Sajne Srajate. All this leads to the mental and physical diseases. And again, that is why Tyagaha Prajnaparadhanam Indriyopashamaha Spritihi Deshakala Atma Vignanam Sadvrittasya Anuvartanam. Charaka says that one should avoid the Tyaga Prajnaparadhanam. Prajnaparada should be avoided. And Indriyopashamaha, you should have an control over the Indriyas, and Smriti, the memory power. And you should have a Gnana of the where you are living, which Kala it is there, and what is
Atma. That means who are you and where are you? All these things should be properly known. Then definitely the person will be having the Sattva Guna. That's purpose. Tyaga Prajna Pradhan is very, very important. And Sadvrittasya Anuvartanam. One should follow Sadvritta so that the person will be having the Tamo Guna, Sattva Guna. And what is Sadvritta exactly? The word Sadvritta is composed of two words, Sad plus Vritta. Sad means right, it's morally good, in accordance with justice. Vritta, actions, regimens, conducts, etc. Thus, Sadvritta means right action, regimen, conducts, and deeds. Chakrapani and Charakasutra says that Satam Sajjananam Vrittam Vyavaharajatam Sadvritam. Association with good people lead to development of good behavior, which can be considered Sadvritta. So this is very, very important that people, if they are following the good people, definitely they will develop good qualities and good behavior. Thus, the corruption or crime can be decreased. That's why Sadvritta is very, very important. And the principles, while telling that Sadvrittas, Acharya Charaka says that Satvachanam Anushtayanam. Following is always Sadvachana. Harshaha Prinanam. Your delightment will be there whenever your cheerfulness. Nivritti Pushtikaranam. Detachment. When detachment is there, no raga, dveshan, etc., no corruption at all. The corruption is because of only ati, raga, dvesha, etc. So Nivritti Pushtikaranam Sreshta, he says. Nastiko Varjanam. So all the corruption people, they will never believe the God, or they may be hating the God, etc. So Nastikas. So we need a Nastika. That's why Nastiko Varjanam. If that people are there, just avoid them. Okay. Laulyam Klesha Karanam system. Klesha is again one of the cause for the crime or corruption. That's why we should avoid that Klesha. And if you see the references of these Sadvrittas, just I will say that Charaka Chikisa and Charaka Sudhastana, Susa Samhita Chikisa 24th chapter, Ashtanga Sangraha Sutra 3rd chapter, Ashtanga Hridaya Sutra 2nd chapter, Bhava Prakasha Purvaka 3rd chapter, Manusmriti 5th chapter, Dharma Shastra also available. I am going textual references because some people may refer these things in the Samhitas. And Sadvrata. So there's a beautiful description by Acharya Vagbhata. Arda Santanta Tyagaha, Kayavak Chetasam Damaha, Swartha Buddhihi Parartheshu, Paryaptam Sadvratam. See, he beautifully says that the person who is passionate, compassion, Tyagaha, charity, nature, Kayavak Chetasam Damaha, controlling Kaya Vak Chetasam, and Swartha Buddhihi Parartheshu. This is very, very important. So selflessness motto. That means even others' work also, if anybody asks you, you should involve in that one and do it. That's called Swartha Buddhihi Parartheshu. Paryaptam is Sadvratam. So these are all comes under Sadvratas. A person who is an Arda Santanata, the compassionate and charity nature and controlling all the Indriyas, etc., definitely he will not be having any corruption activities. And Dashavida Papas. Nowadays, these Dashavida Papas, if they are doing, definitely they will be in the Tamo and Rajoguna property will be more. Himsa, Steya, Anyatha Kamo, Vaishunyam, Parishan Andrutam, Sambinnalapa Vyapada, Abidya, Drik Viparayam, Papam Karmeti Dashada, Kaya Vak Manase Tyajet. So Kaya in vocally, in Manasa, and Kaya, Vachika, all these things. In all this way, we have to avoid this Dashada Papa. When this Dashada Papa is avoided, the person will be getting the Sattva-guna. And social relation, the person should have follow Brahmacharya, should have Gnana, should have Dana, quality, Maitri, Karunya, Harsha, Upeksha, Prashama, Parascha. So these things will become a social relationship. The person will be having the Sattva-guna and they'll never go for this crime or corruption, etc. When they follow the Brahmacharya, to take the knowledge, having the charity quality and Maitri, Karunya, etc. And again, Vagbhata says that Sukartaha Sarva Bhutanam Mataha Sarva Pravrittayaha Sukham cha na vina dharmat dharmat parvo bhavet. So one should follow dharma. That dharma, if you follow, the corruption never comes in that way.
So dharma should be followed. Dharma means that what is the human being's dharma? What is your duty? That they should know very well. Then definitely there will be sattva-guna increases. And so this class is Sadvritta, Karaniya, Akaraniya, this is Kaya, Vak, Chetasam. Other classes Manasika, Charita Sambandhi, Samajika, Dharmika, Vayaktika, Ahara, Adhyayana, Vyayama, Maituna, Samanya. In this, to combat our corruption, Manasika, again Samanya Varjya. So this will be useful. I am not going to tell all the things, only few things which are useful to combat corruption. So Sadvritta related to mental and social health. Acharya Charaka says, Atitinam Pujakaha, honor the guest. That is very, very important quality. Data, give donations. Kalahita Mita Madhuravati. So should speak the context, unhurting, adequate, sweet and meaningful words. And should have self-control. Nishchitaha, free from worries. Nirbhika, fearless. Kshamatvam, forbearing. So if these qualities are there, definitely that the thoughts of corruption, thoughts of crime, thoughts of violence will not come to person. And again, Vinaya, Buddhi, Vidya, Abhignana, Vayovruddha, Siddhacharyanam, Upastaha. Beautifully mentioned that devote and respect teachers, accomplished persons, etc. So this will promote definitely the Sattva-guna in the person. Sarva praneshu bandhu bhutatva syat. Should behave like a kith and kin to all the living beings. If this quality is there, they never go for the crime or corruption. Satya, to be truthful, very, very important. Even Acharya Charaka, while describing Acharya Rasayana, also says that Satyavadinam akrodam, Satya, truth. If you are truthful is there, never think about the other things. And Dinanam Abhipataha, help the poor, this quality. The help the poor qualities improves the Sattva Guna and nowhere corruption occurs. Raga Dvesha Hetunam Hetvacha, should alleviate cause of attachment aversion. This attachment is there, people will go for the unlawful activities to earn the money. Then the corruption occurs. That's why the person should have the cause of alleviate the cause of attachment aversion. Raga Dvesha Hetunam Hetancha. And do not follow, they should not tell lie. So we should inculcate in the people that don't tell lie at all and should not desire for others' property where the corruption will comes. That's why should not desire for others' property, should not indulge in sinful acts, should not initiate the quarrels, should not laugh loudly, should not waste time, should not be in habit of breaking rules. So among this, they should not waste time or may not be relevant here, but should not tell lies relevant, should not be desire other properties, should not indulge in sinful acts, should not initiate quarrels, and should not be in a habit of breaking rules. If these will inculcate in the person, improve the Sattva Guna. And again, he says that any lawful thoughts, that means you should be always think only good things to people and should not be suspicious at all. This also will create the mentality of the crime and corruption. Don't see all the people always in a suspicious manner. Think that whatever they are doing, whatever they are there, don't be suspicious, be friendly. And na madhya dhuta vishaya prasanga isa, should not have any implication towards alcohol, gambling and prostitution. So this gambling, alcohol again will give the way to for corruption and crime, etc. That's why Acharya says that should not have any inclination towards alcohol, gambling or prostitution. And if you follow these things, social and mental sadvrittas which are mentioned by Acharyas, what are the benefits? They modifies the psychological and environmental factors which are causing mental disorders, including crime and etc. Behavior disorders among the children, very, very important. In the school level, in the college level, if you are asking the people to follow these sadvrittas, definitely the behavioral disorders will not occur at all. So corruption or crime, all these also comes under behavioral disorders. And personality disorders also it prevents. Juvenile delinquency in India, again still problem is there among the children. Juvenile delinquency and psychosomatic disorders and drug addiction, alcoholism. These all can be prevented by following the
Sadvritta related to physical and mental, and Sadvritta related to that one. So again, when person is having the Sattva Guna, that is having the Astikatva, Devago, Brahmana, Guru Vruddharchanam, should worship God, cows, Brahmins, teachers, etc., offer oblations, Pota, Balinam Upartaha, offer balis, like offering pindas or balis to forefathers, etc., and Eshtaha, perform religious ceremonies, offering pindas to forefathers, be religious, dharmikaha, astikaha, have faith in God, and Mangalachara, Shila Buddhi, practice auspicious and practice japa and chaucha. If you follow all these things, the person will be always spiritual in the contact. When spirituality is there, there is no question of any crime or corruption. The person will be having always Sattvaguna will be there. That's why the person should be involved in these activities of the Sadvrittas. And do not go for friendship with the unvirtuous. Acharya Sarkar says that, so whenever the person is having these qualities, don't do the friendship. He says that Papa Vritta Vachaha Sattvaha Suchakaha Kalhaprayaha, should not do friendship with the sinful conduct, the speech and one. If the person who is doing sinful acts, their Kayika, Vachika, Manasa, they should not do friendship. And also those who are quarrelsome, always Kalahapriyaha. Again, Papaha, so they are doing the papas and etc. And Lubdha, Paravriddhi Dishaha, so that means their Paravriddhi, the people's growth. So some people will be having, the person is growing in economically and other things. Other people will be having some aversion towards them and they will be dragging them to backside. That's why again Suchakaha, biting, backbiting, all these things. The Acharya mentioned that these people's friendship definitely will lead to that other way like corruption, crime, and etc. The importance of following this call promotes integrity. That's very important. Purpose in life. We should be having the purpose in life. Commitment to achieve higher beings, to achieve the art of living, prevent psychological disorders. And merits of following these Sadvrittas, whatever Acharyas mentioned, whatever I quoted till now, if you follow these Sadvrittas, Sadvrittam yatodishtam yaha samyak anutishtati sa samaha shitam avyadhirayusha na viyujyate. The person can live 100 years without any vyadhi. Again, he says that Nrulopa apurayet yashasa sadhu samvataha, praised by the good people, earns fame all over the world. Dharmartha veti bhutana bandhutam upagacchati, attains virtue and wealth, becomes a friend of all creatures. Again, he says that Puran Sukriti Nulokan Punya Karma Prapadyate, who follows virtuous acts attains the excellent abode of soul after death also. Tasmat Vrittamanushteyamidam Sarvena Sarvada. So Sadvritta should be always be followed by everyone. And to conclude, the personality of a person is enhanced by a good conduct. Sadvritta is code of virtuous act recognized as a mental hygiene. It refrains the man from psychosomatic diseases by infusing non-ailing thoughts to the mind, like crime or corruption, and all these things will not come to our mind if you follow the Sadvritta. Sadvritta inculcates the discipline related to mind, character, social, religious, and personal life. Sadvritta Palana promotes mental, social, spiritual, and physical health. It improves the quality of life and prevents the psychosocial diseases. All these things, theoretically we may be knowing, but needs research to conduct on the code of conduct. The people, those who are following these things and who are Sattva Guna, among them, how their psychological nature, you can conduct research. Sadvritta can be included in the school level education so that the children, when they're growing, they will be adopted these Sadvrittas and can be reduced this corruption and other things, etc. Communication of Sadvritta by 3 methods. Individual level, you can teach the Sadvrittas. Group level, you can teach Sadvrittas, and mass approaches through mass media. Sadvritta can incorporate in primary healthcare level to achieve health for all in coming years also. And necessity of Sadvritta is most meaningful in current era as level of all types of crime has increased, as well as the different types of
mental illness are also increased. And all these are result from the poor mental health and social health. That's very, very important. The corruption, the crime which takes place in the person and the poor mental health and social health. To improve the mental health, to improve the social health, the person should follow Sadvrittas. I can say that the Sadvrittas will improve there is one immunity in our body, like psycho-neuro-immunity axis, PNI axis, psycho-neuro-immune axis. This psycho-neuro-immune axis will activate, then the person will be having the sattva-guna, and they'll think that which is proper, which is improper, what can be done, what can not be done. All these things occurred only because of the psycho-neuro-immune axis enhancement. That psycho-neuro-immune enhancement will be there through proper observance of the Sadvritta. Community can be made free from mental illness and social illnesses to some extent by following only simple principles of the Sadvritta. And my take-home message is follow Sadvritta to promote mental health, thus to prevent and stop crime and corruption. Thank you very much. And we should stop the corruption by promoting the Sadvrittas. And thanks to AYUSH Samriddhi team, Pawan Kumar Sharma sir ji, Professor Agnihotra ji, Professor Vishnu Sharma ji, for giving opportunity. Thank you, Dr. Sudhakar ji. Thank you very much, sir. I hope I have done little justice to my subject. Excellent. You are proper within time, and really this speech, if a corrupted person will listen, they will be in ICU definitely. We must follow this. Thank you very much. Agnihotri sir. Namaskar. Thank you, Dr. Pawan Sharma ji. Great presentation by Professor Sudhakar Reddy ji. We were very calmly, quietly listening and feeling that it is a complete revision of our subject there in our syllabus, which we learned, say, 2-3 decades back. And what sectors you touched over the, say, area where the corruption is generated or used to be. And for that, we would like to have some roadmap, if possible. You pointed out etiological factor as 3 parts. The one is the person who himself is interested to earn money from unfair means. Number 2, a person who gives bribe to get his work done at the earliest out of way. And the third one is to have a victory in the election. These 3 keen sectors where the corruption is rising like anything, not only in our country, in so many countries, and we are one of the very senior at our very senior post. So, out of our whole theme of the Sadvritta, if this could be conveyed as a roadmap or as a sutra or as a remedy, that a person or either he is a student or office bearer or worker, kamchari, if they start their dinicharya before joining the work or in the office itself for a short of, say, 2-3-5 minutes meditation with the view that the learning for santosh is to be given. There is no need of comparison. Comparing itself leads to the dissatisfaction. Whatever is available, if it is gives some satisfaction, person will not go for unfair means earning. So goes the case with the election victory. We know as a philosophical concept that everything is well decided, well in advance. We don't know, and simply because we react. So who will win, who will be defeated? If it is settled in the mind peacefully, to increase, as you told, that psycho-mental enhancement could be possible with the help of the simple meditation or our lesson for Santosh Dhan, then I think the real application of Sadvritta be positive and be achieved by each and every person who is suffering from this thing. And the anti-corruption drive could be, in words and meaning, be possible. Thank you, sir. Thank you, Professor Reddy. Thank you very much, sir. So, what I opine, sir, generally, corruption means convenience piece. If you want some convenience, that means
you are making a person, no innocent person, greedy. That officer may be innocent in the starting, but we are making them greedy and corrupted because we need convenience. No multimillionaire or no well-to-do person is ready to wait for lead time, or neither they are waiting for application, submission. Everything is to be instant. This instantism and this convenience creates corruption. This is my opinion. So I would like to request Dr. Ved Vyas now. Dr. Ved Vyas is younger, energetic, dynamic, SADAVRITTA person, expert, sorry, person नहीं, personify तो बड़ा गलत होगा. और मैं अग्निहोत्री जी से प्रार्थना करता हूं उनका परिचय देने की. There are so many stars in the sky and they have got their lights. It depends that how dark the time is. If the time is very dark, even the small star will give its shining and be recognized. Big stars definitely diminishes the other stars' light. Professor Sudhakar Reddy already given his message to the world, because we are just connected with the YouTube. And now the new star of our field, of course, it is SADAVRITTA, which stands everywhere. So our new star of our team, our platform, or our SADAVRITTA arena is now coming with his whole of the ability, skill, power, and experience. When he will be here, he will also show his batting, and we will all be mesmerized. So here comes Dr. Vedavyas Pandey ji with his whole staunch personality along with its career-long experience. I do hope that our words will be established by his presentation. So I invite Professor Dr. Vedavyas Pandey ji from Puducherry to please come and throw light and give your inputs to today's platform. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thanks a lot. First of all, I would like to thank you for such a brief introduction. So, starting with respected Agnihotri sir, respected Pawan Sharma sir, and respected Sudhakar Reddy sir. First of all, thanks a lot for giving me the opportunity to share the stage with such a big icons of SADAVRITTA. That's respected Agnihotri sir, Reddy sir. You people are the big icons to whom we have heard, from whom we have learned. Reddy sir, starting from my PG, I am hearing. Again, you have to become legendary. No problem. As I told you that, of course, sun is one, moon is one, no problem. But you have to become legendary, and for that we have to make your way clear. Yes, I will try my level best to be on the way how you are telling that, to become a legend, and all the opportunities whichever is on my way, I will try to convert it in the most best what I can give. So thanks a lot for giving me such a good opportunity. And just day before yesterday, I got a call from Agnihotri sir, respected sir, that telling that there's a talk on SADAVRITTA. I was in OP. I told, okay, sir, no problem. Yesterday morning, Pawan Sharma sir sent me that photo. In that, I saw Reddy sir also. Then I called Agnihotri sir. Sir, Reddy sir is there. Sir, 9 o'clock night, you are starting the program. And there are two people, Reddy sir and myself. So how much time you're supposed to give? Because this SADAVRITTA topic is something which we takes 3, 4, or 5 hours generally, because it's a very vast topic. At that time only came to know, okay, the topic is something related to corruption. That too in front of me. That too in front of me. You can also add this word. Then I told, okay, no problem. I talked with sir. Sir told, he gave me one example that how he has presented somewhere, and within that short 10 to 15 minutes, how he has completed beautifully. So I have tried my levels best to present it in a similar manner, in a very short and sweet manner, without elaborating much. So now I would like to share my screen. Am I permitted? Okay, sir.
So is it visible in full screen? Yes, it is in full screen and very clear, visible. Fine, sir. Fine. Coming to the today's topic, that is so SADAVRITTA to combat the corruption. As we all know, today is the International Anti-Corruption Day. So on this occasion, we start with the topic how Ayurveda, in what manner Ayurveda can contribute to stop the corruption or anti-corruption movement, how Ayurveda can contribute in a very healthy manner. That's what the topic is. So we can see here the newspaper telling global problem, corruption. Coming to the definition of the corruption, if you see the Cambridge dictionary, they tell it's a bad behavior. Then further for elaborating that, they tell it's illegal, bad or dishonest behavior. If we see our Ayurvedic correlation, that also tells about Brashta Achar. Brasht, something bad. Achar is again behavior. Brashtaha cha asau acharah, brashtacharah. In Hindi term, we can tell duracharna. And there are a lot of other definitions by which we can correlate the. I will adjust the screen. No, it's okay. The different definition for a modern, whether we are taking it corruption or whether we're taking it bhrashtachar. So there are different definition for that. But this is the apt suitable definition when we are telling it's a bad behavior or brasht achar. And for that, we have to take the proper achar. We have to do the proper achar. Now the question comes, is it a new thing, corruption, or is it an old thing? So if we see the history of corruption, starting from the Kautilya, during that Kautilya Arthashastra, in that book, at the time of the Chandragupta Maurya, they clearly mentions that the vast and evergreen phenomena of corruption, because at that time itself, corruption was present in a very huge manner, and they have taken a lot of steps to improvise that, and still it's continuing. So it's not a new thing. Even if we see in modern references, we are having a lot of references. Candle of Hercules in 324 BC during Athens. Further before that, there's a Julius Caesar in 100 to 44 BC. And there's a art of political corruption. In France, if we see, during the 17th century, there was an art of political corruption which attained its peak. So if we see the corruption level now, it's decreased when compared to previous time. We are more better condition. If we are seeing at the nowadays, previous time corruption was too much. There was a stage when see in 1621, people from this America, North America, they flew from the area and they tried to settle in a place called Plymouth Colony. During that time, they developed the Christianism and religious belief, and they started worshipping. And they told that we have to stop the corruption. And because of the Christianity, developing the morals of the Christianity, the examples of Christianity, they tried to reduce the corruption, and they did it well. At some part, the corruption was reduced. Again, Watergate scandal was there. And the term which we nowadays use, white collar crime, it was first coined in 1930s by Edwin H. Sutherland, who was a sociologist. And he mentioned that corruption is both a moral problem in cultural and individual sense, and an important problem in economic and political lives. तो दोनों साइड में अगर देखा जाए तो एक मोरल प्रॉब्लम, अगर आप नैतिक दृष्टि से देखोगे तो एक मोरल प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल आदमी के लिए, और वही अगर आप देश की दृष्टि से देखते हो एक बड़े पैमाने पे तो इकोनॉमिकल भी है, आर्थिक प्रॉब्लम भी है, साथ में एक राजनीतिक प्रॉब्लम भी है. अगेन करप्शन वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन, और अभी करप्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, it's under the sociology, under the political science, under the history, under the public administration, the science of law. इन सारे फील्ड में हम लोग करप्शन को हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से. There's a reference in Kautilya Arthashastra where they compared the men are naturally fickle minded, मतलब माइंड हमारा जो है चंचल होता है, and they compared it with उसका कंपैरिजन दिया है horses at work, जैसे घोड़े होते हैं काम करते टाइम, घोड़े जो है हर दिन एक ही स्वभाव नहीं होते,
कभी कभी जो है वो वश में आ जाते हैं, कभी कभी वश में नहीं आते, उसी तरह का हमारा माइंड है करके उन्होंने कंपैरिजन दिया है। एंड अगेन इलीगल ट्रांजैक्शन जो उस टाइम होते थे, उस टाइम भी क्या होते थे कि जो मिनिस्टर होते थे उसके ऊपर और लोग होते थे, ये सब जो है जो पैसा जो मिलता था उसको अलग अलग तरीके से वो लोग खाते थे। तो उसको उन्होंने ऐसा एग्जांपल दिया, जो इलीगल ट्रांजैक्शन आज भी जो हम लोग देखते हैं कि फ्रॉड होते हैं अलग अलग तरह के, वो मोदी उधर भाग गया विदेशों में फ्रॉड करके, उसके बाद वो मालिया है, ये सब तरह के इलीगल ट्रांजैक्शन, उसको कंपेयर किया है फिश मूविंग अंडर वाटर, पानी में जैसे मछली तैर रही है और ये पता करना मुश्किल है कि मछली कब पानी पी रही है, उस तरह का उन्होंने एग्जाम्पल देके उसको कोरिलेट किया है। अब ये करप्शन कैसे देखते हैं, हम लोग इंटरनेशनल करप्शन डे बना रहे हैं, कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग, हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस करप्शन स्टेटस इन डिफरेंट कंट्रीज। so that for that purpose we use corruption perception index which is called CPI, और आपके पास लेटेस्ट डाटा है 2021 का CPI का, 100 के नजदीक अगर होगा तो मतलब कम करप्टेड है, 0 के पास होगा मतलब 1 2 3 4 अगर आपका है नंबर तो सबसे ज्यादा करप्टेड है। तो ये पूरा बड़ा डाटा है। तो इसमें अगर आप देखोगे पहले नंबर पर डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड वगैरह आता है, और लास्ट में सूडान, सीरिया, सोमालिया, ये सब देश जो है सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा करप्टेड में आते हैं। और हमारा इंडिया जो है 40th प्लेस, 40th पे मतलब 40 रैंक पे है जो इंडिया स्टैंड करता है, ठीक है। और करप्शन का अगर आप अभी का जो अंदाजा देखोगे, अभी क्या चल रहा है, लेटेस्ट स्टेटस क्या है, तो 2012 से 2021 तक का, 2012 में 94 था, मतलब 100 के बिल्कुल करीब, फिर नीचे आके जो है, सॉरी ये रैंक है, स्कोर की बात कर रहा हूँ, स्कोर टाइम 36 था, अभी 40 हुआ है स्कोर। स्कोर जितना 100 के नजदीक होगा उतना अच्छा है, 0 के नजदीक जितना होगा उतना खराब है। ये इस तरह का जो है सीपीआई इंडेक्स हम लोग लेके चलते हैं। तो बीच में एक बार अगर आप देखेंगे तो मतलब पहले से 2012 की अपेक्षा कम हुआ है, लेकिन 15, 16, 17 में जो था उससे थोड़ा सा बढ़ा है। Now coming to the अब इंडिया में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा करप्शन है? So if we see the state wise this data, then Maharashtra and Rajasthan stands number 1 for the convicted to trial, जो जहां सबसे ज्यादा जो है केसेस पकड़े गए हैं, जहां पर जो है कन्विक्शन हुआ है, जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो है सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र और राजस्थान में पाए गए हैं। अब इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं फर्दर मेंटल इलनेस से। So you see how this corruption is the one side, and the same side corruption is increasing. Again, you see the mental illness. Previously, there was no case of mental illness, even though the cases were there, but not that much. But there's an increase in 6.5 to 7% of the Indian population with mental health issues. So that tells that how mental issues are having a role in corruption. Corruption is increasing, same level mental issues are increasing. Not necessarily all are corruption, but yes, some are corruption. और ये एक और से उससे लगता हुआ एक मजे की बात है, हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इंडिया अभी बहुत नीचे है, 136 रैंक पे है इंडिया। तो ये सब जुड़े हुए हैं। हैप्पीनेस कैसे आएगा? माइंड से। अगर आपका मन संतोष नहीं है, अगर आप खुश नहीं हो तो आपको हैप्पीनेस नहीं आएगा। हैप्पीनेस नहीं आएगा तो क्या होगा? फिर दोबारा से जो है उसका एक मेन कारण करप्शन भी है। करप्शन जो करता है वो कभी हैप्पी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मैं इसको जोड़ना चाहता हूं। दिस व्हाट प्रूव्स दैट करप्शन इज हैविंग effect because of the mental health. There is an effect of mental health over the corruption. So what the world needs is greater mental health. Greed and corruption stem from insecurity and the sense of being not enough. So एक तरफ insecurity, डर पैदा होना, दूसरी तरफ बस अभी नहीं, ये नहीं बोलना, मतलब आपको हमेशा और की चाह, मतलब लोभ जो बोलते हैं, लोभ जो है लगा रहता है, और चाहिए। ये दो चीज है जिसकी वजह से आपको हमेशा जो है ग्रीड और करप्शन लगा रहता है। अगर हम एक नॉर्मल संप्राप्ति की तरह लेते हैं, इसको करप्शन हम बोलते हैं ना, एक बीमारी है, रूट बीमारी है। तो बीमारी है तो उसकी संप्राप्ति भी तो होगी, निदान होगा। तो उसका अगर हम निदान लेंगे तो आहार है जो हम लोग खाते पीते हैं, जिसकी वजह से हम तामसिक और रजोगुण का बढ़ावा मिलता है। विहार हुआ और आचार हुआ जो हम लोग करते हैं, प्रवृत्ति जो है हमारा, जो आजकल जो बिहेवियर चेंजेस जो है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीज मानते हैं, और उसी की वजह से जो है ये हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है। और ये करता क्या है? ये एक अल्प सत्व पैदा करता है, मनोह स्रोतो विकार को जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है।
और उसके बाद मनोदोष जो है आपके तमस और राजसिक जो है इसको बढ़ावा देता है। जब सत्व है तो अच्छा है, लेकिन जब राजसिक और तमोगुण जब बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली आपको जो है आपका जो परसेप्शन है, जो आपका इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष होता है, यहाँ तो मन आ गया ना, तो मन आत्मा इंद्रिय इंद्रियार्थ ये चार चीज एक साथ जुड़े होने चाहिए। जब आपका जब मन दोष हो गया, जब मनो व स्रोतस में कोई विकार हो या अल्प सत्व हो, तो ऐसे कंडीशन में हो नहीं पाता। तो क्या होगा, तो आप प्रज्ञापराध करोगे, गलती करोगे, आपका हीन मिथ्या अतियोग हो जाएगा इंद्रिय से, और उससे जो है आपके जो धारणी वेगास है, जो हमने जो बोले काम क्रोध लोम वगैरह जितने जो धारणी वेगास है जिसको धारण करने चाहिए वो आप धारण नहीं कर पाते हो, और जब वो धारण नहीं करते हो तो एक तरह का वो बीमारी या मनोविकार या भ्रष्टाचार के नाम से वो बाहर आ जाता है, वो बाहर दिखना शुरू हो जाता है। अब इसके दो तरीके हैं, निदान परिवर्जन। निदान कैसे, उसको जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं निदान को हटाना, तो उसके लिए मेन है स्वस्थोर्थ का अनुवर्तन, स्वस्थोर्थ का पालन करना। स्वस्थोर्थ में जितने बोले गए हैं, दिनचर्या हुआ, ऋतुचर्या हुआ, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं सद्व्रत हुआ, ये सारे जो है इसका पालन करना। और चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके बारे में नहीं बोलते, लेकिन अगर आप देखिए तो दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय, ये 3 तरह की चिकित्सा बोली गई है। ये इसका जो है टोटल आपका ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार का एक संप्राप्ति बन जाता है। ये धारणी वेग, इसके बारे में बोला है, मास्तु धारियत वेगान हितार्थी प्रेत्य चेचा सासानाम अशस्तानाम मनोवाक काय कर्मणम। यहाँ आ गया मेन बात, मनोवाक काय कर्मणम, मानसिक, वाचिक और कायिक कर्म, ये 3 जो है, जब आप इन तीनों कर्म से, इन तीनों चीज से, मानसिक तौर से या वाचिक तौर से या कायिक तौर से आप अति साहस का कोई काम करते हो। अति साहस मतलब जो आपका शरीर, जो आपका मन, जो आप कर सकते हो, जो आप उससे ज्यादा करते हो, तो उसमें जो है दिक्कत पैदा होती है। वो जो है अलग अलग तरह के जो है बीमारियां, मानसिक तौर से, वाचिक तौर से, कायिक तौर से वो शुरू करता है। तो मानसिक तौर से बताए गए क्या क्या है जो अशस्त है, जो आपको नहीं करने चाहिए, तो वो है लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, वेगान, विधारेत, नैर्लज्जा, ईर्ष्यातिरागाणाम, अविद्यायाश्च बुद्धिमान। और वही जब वाचिक आ गया तो परिषस्य, अतिमात्रस्य, सूचकस्य, अनर्थस्य च, वाक्यस्य अकाल युक्तस्य धारयेत वेगम वेगम उत्थितम। और वही कायिक हो गया तो देह प्रवृत्तिया काचित विद्यते परपीड़या, दूसरे की पीड़ा करना, स्त्री भोगा आस्ते या हिंसादया तस्या वेगान विधारेत। तो ये सब इस तरह की जो है इन्होंने ये बातें जो है हमारे यहाँ बोली गई है आयुर्वेद में, कि मानसिक तौर से आप जो है किसी को जो ईर्ष्या है, लज्जा है, राग है, अविद्या है, ये किसी के बारे में बुरा बोलना, कि आपको किसी के बारे में लोभ होना, किसी और की वस्तु को पाने की इच्छा करना, और स्त्री भोग करना, हिंसा करना, ये सब चीज जो है ठीक नहीं है, बोला गया है, और ये सब चीज का धारण नहीं करना चाहिए। फिर वही दशविध पाप क्रम फिर से रिपीट हो गया, जो सर ने भी पहले बोला, हिंसास्ते अनेता कामम वैशुन्यम प्रशांतम सम्मिन्नालापम व्यापादम अविद्या। तो प्राणियों को मारना हुआ, चोरी करना हुआ, ये सब तरह के जो है ये शारीरिक पाप कर्म है जो कभी भी करने नहीं चाहिए, जिसके बारे में सोचना तक जो है बुरा माना गया है। क्योंकि जब आप इस तरह की बातें सोचते हो तो आप भी उसी तरह के नेगेटिव हो जाते हो, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वाचिक कर्म में चुगली करना हुआ, कठोर वचन हुआ, झूठ बोलना हुआ, असंबंध बोलना हुआ, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसके बदले आपको जो है ये इसमें अष्टांग हृदय में बोला गया है, जनस्य आशयम आरक्ष्य, मतलब जैसा वो चाहते हैं उस तरह सोच के, जनस्य आशयम आलक्ष्य, जो चाहते हैं, जो सोचते हैं उस तरह सोच के, यो यथा परितुष्यति, जो जैसा संतुष्ट हो, जनस्य आशयम आलक्ष्य यो यथा परितुष्यति ते ततेव अनुवर्तेत, उसको आप वैसा ही करो। पराराधन पंडिता, उसको पराराधन पंडित बोलते हैं, पराराधन करके, पराराधन पंडित करके एक नाम दिया गया, जैसा जो चाहता है उसको उस तरह से बोला जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी की चुगली करना और ये सब चीजें अच्छी चीज नहीं है। सदुर्त में फर्दर जो है हम लोगों को जनरल प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट साइकिक डिस्टर्बेंस के बारे में जो है बहुत लंबा चौड़ा विवरण है कि साइकिक डिस्टर्बेंस में क्या करना चाहिए। प्रिवेंटिंग साइकोसोमैटिक डिस्टर्बेंस के लिए एक अलग अलग हम लोगों को पूरा दिया गया है, वो ऐसी कोड ऑफ जनरल एथिक्स क्या है, और कंडक्ट ऑफ टेकिंग डाइट, आहार कैसे खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये सब चीजें हैं। एंड देन अगेन कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग नेचुरल अर्जेस,
तो आपका जो है आधारणीय वेग है उसको कैसे आपको करना, मलमूत्र विसर्जन जो है आपको सड़क पे नहीं करना चाहिए, गुरु वगैरह इन लोगों को देख के नहीं करना चाहिए, सब चीजें जो है बहुत विस्तार में दिया गया है, जिसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा है वो, और उसके बाद एक एक और निकालेंगे और तो और लंबा होता जाएगा, एक एक चीज को और मैं पकड़ूंगा। तो फिलहाल तो मैं अपने मेन टॉपिक फिर से आता हूँ, भ्रष्ट आचार, उसके लिए है आचार रसायन। प्रिवेंशन कैसे करना है आचार का, भ्रष्टाचार का, आचार रसायन से। ट्रीटमेंट की बात तो होगी, हमें नहीं उससे कोई लेना देना, हम तो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। तो भ्रष्ट आचार के लिए आचार रसायन। आचार रसायन क्या है, सत्यवादिनम, सच बोलिए हमेशा, अक्रोधम, क्रोध ना करें, निवृत्तम मद्य मैथुनात्, मद्य और मैथुन इन दोनों से, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, मद्य वगैरह का त्याग कीजिए। अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, हिंसा का काम ना करें। उसके बाद अनायास, मतलब आपको जो आपसे भी ज्यादा जो है मतलब साहसिक काम इस तरह के वो सब ना करें। उसके बाद शांत रहें, हमेशा शांत स्वभाव के रहें। प्रियवादिनम, बिल्कुल मीठा बोलना चाहिए। जपा, हमेशा जो है एक क्या बोलते हैं उसको, हम लोग जो है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी टाइप का, और हमेशा जो है अपने मन में एक ध्यान करते रहे कि हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, इससे कुछ वो तो नहीं हो रहा है, ये सब तरह का जप है। उसके बाद शौच, शौच परम, जपा शौच परम। धीरम, बिल्कुल साहसिक होना है, निडर होना है, कभी डरना नहीं है, क्योंकि ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से आपका सत्वगुण घटता है, इसलिए सत्वगुण ना घटे इसका ध्यान रखने के लिए धीरम होना चाहिए। दान नित्यम तपस्विनम, हमेशा दान देना चाहिए। दान पुण्यादि कर्म जो है, पूजा पाठ, उसके ये क्या बोलते हैं, जो आप दान कर्म वगैरह में भी आपका जो है मन लगना चाहिए। उसके देव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्धार्चने रतम, देव हुआ, देवता जी, देवतागण जो है, गो है, ब्राह्मण है, आचार्य है, गुरु है, वृद्ध लोग हैं, इन सबका हमेशा पूजा करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। ये आजकल अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर का जो पहले जो रिस्पेक्ट होता था, हम लोगों को गुरु का जो रिस्पेक्ट होता था, अभी वो मतलब ये है कि उतना ज्यादा वो आचार रहा नहीं है। बच्चे लोग भी आते हैं, उनका भी तरीका बहुत अलग सा होता जा रहा है जो हम लोग पढ़ाते हैं। तो वो ये सब जो है आचार की कमी है, जिसकी वजह से जो है आगे जाके हम लोग देख रहे हैं तरह तरह की नई नई बीमारियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार अधिक हो रहा है। ये सब जो है मेन एक नया जनरेशन जो है ना, नया जनरेशन का जो तरीका है, जो मॉडर्नाइज कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसका मेन इम्पैक्ट है ये जो है। उसके बाद अनृष्य परम नित्यम नित्यम करुण वेदनम समझ आगरणम स्वप्नम, मतलब जितना जागते हो उतना ही नींद और आपका जागना दोनों ऑलमोस्ट उसमें एक समभाव होना चाहिए। ये नहीं कि आप रात को सो ही नहीं रहे, पूरी रात काम कर रहे हो और दिन में भी आप काम ही कर रहे हो, या रात में कभी 1 घंटा सो लिए, तो नहीं। समझ जागरण स्वप्नम दोनों एक साथ होना चाहिए। नित्यम क्षीर घृताशिनम, आजकल लोग ये कहते हैं कि भाई डायबिटीज हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके चक्कर में दूध नहीं पीते, उसका घी नहीं खाते क्योंकि वो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। लेकिन ये तो नित्य सेवनीय आहार में बोला, डेली खा सकते हो आप। कौन सा, क्षीर घृताशिनम, क्षीर और घृत खाने चाहिए क्योंकि नरिश करता है बॉडी को, ब्रेन को हम लोगों को डेवलप करता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश काल प्रमाणाज्ञम युक्तिज्ञम अनहंकृतम, तो देश काल प्रमाणाज्ञम, आप जिस देश में रहते हो, जिस काल में हो, उसका आपको बिल्कुल अंदाजा होना चाहिए। अभी कौन सा ऋतु आ रहा है, जैसे आप पुराने लोगों को पूछोगे तो तुरंत बोल देंगे ये मास है, इसमें जो है आपका बारिश होने वाला है, इसमें जो है गर्मी पड़ेगी। तो आपका इस सब चीज का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और आपको युक्ति, आप जो है पूरा प्लान करके चलेंगे, आपका जो भी काम होगा वो प्लान करके चलना चाहिए। आजकल की तरह नहीं कि भाई चलो बैग उठाए चल दिए, इसको जो है तुरंत आपने इंस्टाग्राम में डाल दिया फोटो, फेसबुक में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, सडनली रीच हियर, सडनली ऐसा नहीं होता है। आपको जो है युक्ति पूरा प्लान तरीके से कहीं भी अपना काम करना चाहिए। उसके अनहंकृतम, आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। शस्त्र आचारम संकीर्णम अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम, आपके आचार अच्छे होने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। तो ये सब है इसमें। उसके बाद उपासितारम वृद्धानाम आस्तिकानाम जितात्मनम धर्मशास्त्र परम विद्यात नरम नित्य रसायनम गुणे रेते समुद्यते प्रयुक्त रसायनम रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान समुष्णुते। तो आप ये सब जो है धर्म की बातें करोगे, धर्म का पालन करोगे। उसके बाद जितात्मना वृद्ध आस्तिक लोगों के साथ अगर आप अपना कंपनी रखोगे, फ्रेंड्स रखोगे, तो आपको जो है हमेशा आपको एक रसायन की तरह जो है गुण करेगा। ये वही फिर से एक्सपेंड किया है, तो ये मैं आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है। ये वही सेम सर ने रिपीट किया, सर की जो हमारे रेड्डी सर ने किया उसी चीज को एक बार और रिपीट किया है, जो चरक संहिता में बोला गया है कि सद्वृत्तम अनुष्ठेयानम हर्षम प्रीणानम
जो हमें प्रीणन करती है, जो नरिश करता है। शोकः शोषणानाम, शोक अगर आप करोगे तो आप जो है बिल्कुल सूखे हो जाओगे, बिल्कुल पतले हो जाओगे। लौल्यम क्लेशकराणाम, अटैचमेंट अच्छा है लेकिन ज्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज से, बच्चे से हो या कोई ऑब्जेक्ट से हो, किसी वस्तु से हो, वो आपको हमेशा दर्द ही देगा। विषादो रोग वर्धनानम, हमेशा दुखी रहोगे तो कुछ ना कुछ रोग हो ही जाएगा आज निकल। असदग्रहणम सर्व अहितनम, असदग्रहणम, गलत तरीके से कुछ चीज को इंटरप्रेट करना या गलत तरीके से सोचना, या आपका जो क्या बोलते हैं परसेप्शन गलत है, या आप उस चीज को ध्यान से सोचते नहीं हो। कोई भी चीज है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया मान लीजिए, उस चीज को आपने प्रॉपर से इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि भाई ये सही है गलत है, और आप इम्प्रॉपर कुछ चीज को लेते हो तो वो आपको नुकसान करेगा। तो ये सब चीजें उसके नास्तिको वर्ज्यानम, जो भी नास्तिक आदमी है, जिसको भगवान से कोई मतलब नहीं, जिसको मोरालिटी से कोई मतलब नहीं, जिसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स नहीं है लाइफ में, ऐसे लोगों को हमेशा दूर रखना है, क्योंकि नहीं तो आप भी उनके साथ में गलत तरीके में फंस जाएंगे। सर्व संन्यास सुखानाम इति, ये सबसे लास्ट के लिए बोला है। सबसे ज्यादा सुखी क्या है? सब कुछ छोड़ दो, सर्व संन्यास छोड़ दो, मतलब संन्यास प्राप्त कर लो, जो हम लोग वानप्रस्थाश्रम के बाद जो बोलते हैं संन्यास के गति में। ये फर्दर जो है एक एक को एक्सपेंड किया है, तो मैं ये पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें साथ से ज्यादा सबने कवर कर लिया है। देवगो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्धाचार्य आचरेत, अग्नि उपचरेत, औषधि प्रशस्त धारेत, सिद्धाचार्य उपासता मंगलाचार शीला। तो जो हम लोगों ने जो पहले जो देखा ना एक एक करके जो उसके बारे में जो बोला गया है, जो मानसिक कर्म बोले हैं, मोरालिटी के लिए बोला है, पढ़ने के लिए बोला है, ये सब चीजें जो है सबका बहुत विस्तार से वर्णन है, जिसमें आगे टच नहीं करूंगा। अब हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है। जो हम लोग बोल रहे हैं आचार बोल रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं मेडिटेशन करो, देव की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, गो ब्राह्मण की पूजा करो, ये करता क्या है बेसिकली? तो ये हम लोगों को एक उसका मॉडर्न कोरिलेशन में अगर आप देखेंगे तो एड्रिनल मेडुलास प्रोड्यूस एड्रिलेनिन विच इज रिलीज इनटू द ब्लड सप्लाई। तो ये जो एड्रिनलिन है जो ब्लड में ज्यादा रिलीज होता है, उसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उसकी वजह से जो है आपका बीपी हाई हो जाएगा और अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए अगर आप ज्यादा क्रोध करते हो, ज्यादा लोभ करते हो, ज्यादा जो आपके जो धारणी वेगास है उसमें अगर आप ज्यादा इन्वॉल्व करते हो तो एक एड्रिनल का रिलीज हो जाता है। दूसरा आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट करता है आपका एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है ACTH, जिसकी वजह से आपका जो है कॉर्टिसोल सिंथेसाइज होता है। कॉर्टिसोल फर्दर जो है अलग अलग तरह का जो है डिजीज जो है करता है, जिसको हम लोग HP एक्सिस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है उसका स्टिमुलेशन होता है, और कॉर्टिसोल से फर्दर जो है आपको बहुत अलग अलग बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। ज्यादातर ये देखा भी जाता है, जैसे जैसे आप 40-50s के बाद आते हो ये सब चीजें बहुत कॉमनली आती है। उसका मेन कारण है स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा ये सब चीजें धीरे धीरे बढ़ती है। 40-50s के बाद जो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह की बीमारी होती है। क्यों होती है? सडनली बीमारी होगी आपको, ठीक है, वो आदमी जो है थोड़ा उसका जो है क्या बोलते हैं एज होता है तो थोड़ा फंक्शंस कम होते हैं, लेकिन इतनी बीमारियां, उसका एक मेन कारण जो है जो ब्रेन से रिलेटेड ये सारी बीमारियां हैं सब जो है मेन कारण स्ट्रेस है। हम लोगों का जो डेली जो हम लोग जो स्ट्रेस फील करते हैं जॉब की वजह से, घर में, ये सब चीज उसका मेन कारण है। और उसके बाद ये सेम इंटरल्यूकिन जो है वन जो है वो एक तरह का कंपाउंड है, एक तरह का इम्यून सिस्टम को जो है वो इफेक्ट करता है। एक स्टडी है जो दिखा रहा है कि आपका जो है डोपामाइन जो है वो बढ़ेगा अगर आप रेगुलर आचार आचरण करते हो, रेगुलर योग करते हो, यम नियम का पालन करते हो। यम नियम में भी वही बोला है, योग में भी, उसमें भी उन्होंने जो है यही बात की। यम में यही बोला कि अहिंसा सत्यास्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य। उसके बाद फिर नियम में भी इन्होंने यही चीज बोला है कि भाई शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पर निधाना। तो हमेशा हम लोगों को जो है एक स्पिरिचुअल सेंस में, एक तरह से तप हुआ, स्वाध्याय हुआ, आपको जो स्पिरिचुअल सेंस में जो खुशी मिलती है उसको अडॉप्ट करना है, ना कि किसी और को नुकसान करके, किसी और को दिक्कत पैदा करके। तो उसकी वजह से जो केमिकल जो होता है डोपामाइन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, गाबा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, नोरेपिनेफ्रिन जो है जिसकी वजह से हम लोगों को हाई बीपी होता है, वो सब जो है जिसके जो वो इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। ऐसे ही जो मैटर होते हैं, अब इसमें अब बोलते हैं कि जो सेला जो मैटर होता है, ब्रेन में एक सेला करके एरिया होता है जिसके अंदर पिट्यूटरी होता है। जनरली जो स्ट्रेस वाले लोग होते हैं आफ्टर 50s और 60s की एज में उसका सेला एम्प्टी हो जाता है, मतलब उसको पिट्यूटरी दिखता ही नहीं उसमें। कभी आप MRI स्कैन या पैट स्कैन वगैरह करके देखिए, उसमें सेला ही नहीं दिखता, कभी सेला के अंदर पिट्यूटरी गायब हो जाता है।
और उसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, उसके बाद आपका जो है पूरा एचपी एक्सिस जो है वो आपका ये खराब हो जाता है, आपका मीन्स जनरली वो पूरा डिफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से पूरा जो है बीमारी होता है। तो ये एक जो है, अगर आप आचार रसायन करते हैं, अगर आप योग वगैरह में करते हैं, रेगुलरली ध्यान करते हैं, अपने ब्रेन को जो है अपने अपने आप में हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट अवरसेल्फ, जब हम अपने अंदर देखते हैं अपने ब्रेन, अब हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है वो, और एक्टिवेट होता है उसकी वजह से देखिए ग्रे मैटर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, न्यूरोनल एक्टिविटी बढ़ती है, ग्रे मैटर का उसका ये क्या बोलते हैं आपका व्हाइट मैटर इंटीग्रिटी बढ़ता है, कॉर्टिकल थिकनेस बढ़ता है। ये एक स्टडी है जो थेरापेटिक रोल ऑफ योगा इन न्यूरो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, जिस योग में, इस योग में जो है केवल आसन ही नहीं लिया, हम लोग योग बोलते थे जनरल कंसेप्ट में केवल आसन लेते हैं, बट आसन एक अकेला चीज नहीं है योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि ये पूरा ही है। तो इसमें जो है मेन इन्होंने मेडिटेशन को पार्ट किया था इसमें, इस पूरे इसमें स्टडी में ज्यादातर मेडिटेशन पार्ट है। अगर इसमें आप देखेंगे पूरा योगा एक्सर्ट्स रेगुलेटरी इफेक्ट ऑन ब्रेन सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड प्रमोट्स कॉग्निटिव टास्क पर्टिकुलरली वर्किंग मेमोरी, जो वर्किंग मेमोरी है जो आपको हमेशा यूज करने वाला है उस पर ज्यादा इफेक्ट करता है। फर्दरमोर योगा इंक्रीजेस इंटर हेमिस्फेरिक कोहेरेंस एंड सिमेट्री एंड इंप्रूव्स न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शन। तो जो न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शन है उसको, जो आपका नर्व, जो हम लोग बोलते हैं कि एज होते होते जो है न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट ज्यादा होता है, उसको स्ट्रेंथन करने में योगा हमारा बहुत यूजफुल रोल रहा है। एसपियासा का एक साइंटिफिक स्टडी है जो इन्होंने निमहैंस करके न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल साइंस बैंगलोर जो है उसमें किया है स्टडी। मल्टीपल लाइन्स ऑफ एविडेंस सजेस्ट योगा प्रमोट गाबार्जिक इनहिबिटरी टोन, उसके लिए उसको बढ़ावा देता है। और ये एमिगडाला जो है, राइट एमिगडाला जो है, उसकी स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी, मतलब केवल सिक्रीशन ही नहीं, हार्मोनल सिक्रीशन ही नहीं, इवन स्ट्रक्चरल जो डैमेज हुए हैं उसको भी ये दोबारा से ठीक करता है। हार्मोन सिक्रीशन तो नॉर्मल करता ही है, साथ में स्ट्रक्चरल डैमेज तक को चेंजेस देखा गया है। So lastly, I want to conclude it with that maintenance of swasthta. If we are doing sadvrita properly, it helps in maintaining swasthta in our body. So all the swasthta lakshanas will be maintained, and it helps in prevention of nij and agatmaj rogas, prevention of janapodhamsa, its well-being of physical, mental, social, and spiritual well-being, and so ultimately attaining the goal of health only. And it helps regarding the self-control for not only for our age people, even for children also it's very necessary to do self-control. आज की तारीख में बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखोगे तो एक स्टडी था, लेटेस्ट ही था, 2020 का स्टडी था, जिसमें कि उसमें बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 80% बच्चे जो है, 80% बच्चों को प्रेशर ये है कि वो फर्स्ट कैसे आए, फर्स्ट नहीं तो कम से कम टॉप 10 में कैसे आए। तो वो बंदा जो है, वो बच्चे जो है बिल्कुल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में जी रहे हैं, वो लोग पढ़ाई से ज्यादा जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में कि मैं टॉप 10 में कैसे आऊं। तो उस चीज को वो करने के लिए जो है वहीं से जो है करप्शन शुरू हो जाता है बच्चों का, वहीं से बच्चों के लेवल से ही हमारे यहाँ बेसिकली करप्शन शुरू होता है। तो वहां पर आपको सेल्फ कंट्रोल वहां सिखाना है, उस लेवल पे हम लोगों को एक्शन लेना है। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट sadvrita should be included in the part as sir has told, Reddy sir has told, and that should be taught, and the moral responsibility, respect should be inhabited within in them. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जी रहे हैं, हमारे पास पूरा मेडिसिन है, लेकिन मोर्टेलिटी कम हुआ है मगर मॉर्बिडिटी बढ़ा है। the morbidity has been raised because we are having very good supplementary this what you call aids by which we can live for longer life but better than life. So how to decrease that better than life से बाहर अगर आना है, हमारे पास पूरा मेडिकल, हमारा साइंस इतना बढ़ गया है कि मोर्टेलिटी कम हो गया, लेकिन बेड पे पड़े हुए आपके सालों निकल जाएंगे। तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए सद्वृत बहुत ज्यादा जरूरी है, अल्टीमेटली डिलेस डेथ। एंड लास्टली इत्य आचारः समासेन यम प्राप्नोति समाचरन् आयुर आरोग्यम ऐश्वर्यम यशो लोकांश शाश्वतान। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और यश, ये सब जो है हमेशा के लिए आप मेंटेन कर सकते हो, यह लोक और परलोक दोनों के लिए बात कहा गया। इस लोक में अभी भी, और संहिताकार ने ये भी बोला है कि आगे आने वाला जो आपका जो टाइम है, मतलब अगला जो जन्म है, उसमें भी जो आप ये कर्म लेके जाओगे, अच्छे कर्म ही लेके जाओगे। अगर आप इस जन्म में ये कर्म करोगे तो अगले जन्म में भी आपको ये कर्म, आपका जो है खाता बंद नहीं होगा, आपका खाता ऐसे चीज चलेगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी।
Thank you very much. Thank you very much, Dr. Vedvyas. You have given very new aspect. Everything is new. Thank you. Thank you. Agnihotri sir. Namaskar. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. And again, our beloved Dr. Vedavyas ji. It was as per our expectation, and again, beyond our expectation. The basic fact is, which I was expecting from you, that simply going through the text is not so important because it's well known, and most of the time our learned Ayurvedic fraternity persons are there to view and to hear. But the way you quote the datas, that make more interesting and more imperative with the view that this is happening, this is happening, this is happening, right from the Cambridge dictionary to the status and ranking of our country. The point which you touched, that political corruption, it is really, I think, endless. Rather, it is coming from Kautilya. And again, during the Mughal, you see, there used to be the assassination. The sitting king was murdered, and or he was dethroned, and the other person came to the power. So the political scenario, economical scenario, and social, these are very vast issues. Even we remember in Nepal, the whole of the royal family was assassinated. 7, 8, 9, 10 murders were in one slot. Anyway, so if it is a matter of correction or betterment, it will definitely start with the personal level. So the personal concept of Sadavritta is equally important, which ultimately gives relief to our mental status. As you told, that the release of the extra release of the dopamine and all that. So to protect our mental status, a person who is mentally sound definitely be able to keep himself away from the corruption. May it be a matter of unlawful earning or to pay the respect to the society and the near and dear. So your presentation is wonderful, and it was as expected, as mesmerizing, because we have to take out some essence from the text in the terminology of the persons across the world, understandably language and its viewpoint, not only the theory one. So you touch that area, and I am here to pay my respect to so many important persons who joined today. Luckily, Dr. Sadhana Madam is here, who is the Dean. Professor Niru Nathani has also joined. Professor Vishnu Priyadas also joined. Professor Dineshwar also joined. And Professor Kamlesh Sharma ji from Jaipur, he also joined. Meanwhile, Professor C.P. Sharma, Dr. M.S. Sharma ji, Mallikarjun sir, so many big guys joined. It means today's topic and its practically approach is made them to knock my window, and I just put them in tree. So it was a great process when you were speaking. So so many respected persons are there. Professor P.K. Goswami, he also joined. So there was a great contribution from BHU, from Jaipur, from JSS College, again from Pondicherry, again from Bhopal. So these all big guys made us more and more, say, comfortable to conduct today's webinar. And with these words, to thank you, I hand over to Professor Pawan Sharma ji for further proceedings. Yes, sir. Sir. Now stage is yours, sir. Session is open. Thank you so much. So it's almost 10:22, and we have got a very learned person with us. And for me, it's a very difficult task to manage all these sessions. So I would like to start with, especially considering the, say, important point that Swasthvritta person, they should be taken first. So I would like to have pleasure to invite Professor Niru Nathani, Head of Department Swasthvritta IMS BHU Varanasi, to say a few words on this topic and how she reacts as far as the contribution of Sadavritta could be possible for the warding of the corruption from India, from individual, and from world. Yes, Professor Niru Nathani, ma'am.
Are you here? गुड इवनिंग सर। Good evening. Very good evening. Yes. सडनली madam. आपने मेरा नाम लिया। लेना अचानक से था। मैं प्रिपेयर ही नहीं थी इस बात के लिए, अचानक से अब आपने मेरा नाम ले आप दिया। प्रिपेयर हो, आप लोगों को फिर एक बार सोचना पड़ेगा कि अभी कोई ऐसा अब नहीं नहीं ठीक है ROTC सर, हो लेकिन सकता ये है। टॉपिक, इस टॉपिक में प्रिपेयर होने की जरूरत ही नहीं है। टॉपिक तो जी। जन्म से आता है, तो जी इसलिए प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। जी तो सबसे पहले मैं सभी सीनियर्स को नमस्ते मेरा, और सारे मेरे जूनियर्स और सभी को मेरा नमस्कार। प्रणाम मैडम। नमस्कार। नमस्कार वेद व्यास जी को भी अभी मेरा उनसे भेंट हुई थी जबलपुर में। और डॉक्टर रेड्डी सर का मैं थोड़ा लेक्चर नहीं सुन पाई, थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने। मेरे सारे आज मैंने अपने PhD स्कॉलर्स, MD स्कॉलर्स को भी मैंने बोला कि जरूर सुनना आप लोग। I acknowledge this. Yes, ma'am. यस सर। तो सर ये टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है जो कि आपने चूज किया स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ के सारे डायमेंशंस को कवर नमस्कार करता है नितिन। ये, नॉट ओनली फिजिकल। हेलो Yes, yes. Please नमस्कार सर। continue. नमस्कार यस सर। नमस्कार रेड्डी सर। जी। जो नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, हम जितनी भी स्ट्रीम्स है मेडिसिन की, मॉडर्न मेडिसिन या जो भी, जो सब फिजिकल हेल्थ के पीछे जा रहे हैं, और बहुत हुआ तो मेंटल हेल्थ के पीछे जा रहे हैं। एक मेंटल साइकेट्री ब्रांच है, लेकिन जो है सोशल हेल्थ की हम बात नहीं करते, और स्पिरिचुअल हेल्थ की तो बात बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो हमें जो बात करनी है, जो ऑल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, उसमें उसको जो है मेंटेन करने के लिए सद्वृत्त का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और ये सद्वृत्त जो है वो हमें पढ़ने से, कि हम किताबों में पढ़ लें, उससे नहीं आएगा। ये हमारे बाय बर्थ, हमारे कल्चर में, हमारे डेली एक्टिविटीज में इनबिल्ट है, इनकलकेट है। तो उसको हमें बढ़ाना है, और अपने कल्चर में जो है इनबिल्ट है, उसको हमें लोगों तक बताना है। नॉट ओनली इन चरक संहिता बट इन ऑल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर। ये सारा कुछ, सारा सद्वृत्त के रूप में भरा हुआ है, और अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो नो डाउट करप्शन दूर होता है। और ये सब फॉलो ना करने की वजह से ही आज समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं वो बढ़ रही हैं। तो हमें, तो इसके लिए हम ये कि किताबों में पढ़ा दें, आज हमने 2 लेक्चर सद्वृत्त के ले लिए, BMS के, MD के, ऐसा कुछ करने से नहीं होगा। इसको हमें खुद फॉलो करना होगा। अगर हम सत्य बोलते हैं तो नो डाउट हमारे साथ 4 स्टूडेंट जो बैठते हैं वो भी सत्य बोलेंगे, देखेंगे कि हाँ इनके आगे झूठ नहीं बोलना है, या झूठ बोलेंगे तो ये समझ लेंगे कि ये झूठ बोल रहा है स्टूडेंट हमारा। या तो इस तरह से अगर हम उसको फॉलो करते हैं अपनी रूटीन में, तो हमारे साथ में रहने वाले जो है वो भी उसको फॉलो करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, तब वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा हमारी सोसाइटी में। जैसे कि कहा भी गया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा, कि आप अगर हिंसा नहीं कर रहे हैं तो आपके आसपास रहने वाले भी अहिंसक हो जाएंगे, वो भी आपस में वैर का त्याग कर देंगे। हालांकि कहना मुश्किल है, लेकिन कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जब तक हम इसको करेंगे नहीं, खाली कहते रहेंगे, तो उसका फ्रूटफुल नहीं होगा उतना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा नमस्कार, और नियुति सर को धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम। आपका जो इनपुट हमें आज मिले हैं वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करते हैं कि इसका हमें अपने स्तर से ही ओन करना होगा। सद्वृत्त के जितने भी हमारे आचरण संबंधी व्यवहारिक कदम हैं, हम व्यक्तिगत रूप से लेंगे, हमसे ये दूसरों तक प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा और समाज में इसका संदेश जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। अब इसी क्रम में मैं परम आदरणीय डॉक्टर साधना मैडम जी को इनवाइट करता हूं कि उनके भी 2 शब्द मिल जाएंगे, क्योंकि घड़ी हमें बार बार ये कहती है कि हम बहुत लेट आपको कष्ट नहीं देना चाहते, जल्दी जल्दी 2-2 मिनट में, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैम कुछ अपनी बात बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार शर्मा सर, पवन अग्निहोत्री सर, नमस्कार। आज का विषय सद्वृत्त जो हम लोगों ने लिया है, और दोनों वक्ताओं ने, रेड्डी सर ने और वेद जी ने जो बताया वो डिटेल था। स्वस्थवृत्त में जो भी हमें शास्त्रोक्त जो है पहले से बताया हुआ, हमारे आचार्यों ने जितना किया है वो सब उन्होंने इतना विस्तृत वर्णन किया है।
इसमें मैं एक थोड़ा सा टिप्पणी देना चाहूंगी कि हम लोग आयुष से जुड़े हैं और आयुष के इसमें मैं कहना चाहूंगी कि ये विषय आता है स्वस्थ वृत्त। पहले वो 3rd ईयर में था, अभी 2nd ईयर में आया हुआ है। तो ये सब सब्जेक्ट खाली पढ़ना, पढ़ाई करना, एग्जाम देना और पास होना, यहाँ तक ही सीमित रह गए। हम लोग ये कर सकते हैं कि आयुष को एक लेटर लिख के सदवृत्त का पालन कैसे करें। आज हमारे आयुष में कितने हजारों लाखों स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनको फर्स्ट ईयर से जैसे कॉलेज में आते हैं उसी वक्त आधा घंटा या 10 मिनट उनको सदवृत्त कैसे पालन करना चाहिए, ये यदि हमने उनको सिखाना 4 साल तक डेली यदि करते रहे तो उनका जो ब्रेन है या डेवलपमेंट जो है उनका आचार का, तो आचार व्यवहार उनको अपन ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज के स्टूडेंट सब मॉडर्न पढ़ के आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, खाना पीना और मोबाइल की वजह से उनका भी आचार विचार बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। किसी के साथ दोस्ती करना या कुछ व्यवहार जो है गुरु के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं है। तो इसके लिए हम भी जवाबदार है कि हम स्टूडेंट्स को इतना डेवलप नहीं कर सके। यदि हमने सदवृत्त का पालन जो करने का है या उसका एक मोटो बनाए या उसका एक गीत बनाए या वो डेली बच्चों को हम बताए, सिर्फ हम स्वस्थ वृत्त में खाली 2nd ईयर में हमने पढ़ाई की, एग्जाम दिया, पास हो गया, सब्जेक्ट खत्म। तो ये सब बातें हमने अपने बच्चों को यदि पढ़ाए, लाखों बच्चे हैं हमारे ऑल इंडिया में, तो उनको यदि पढ़ाए तो वो समाज में जाएंगे और समाज की सुधारना करनी है या उनको प्रैक्टिस करना है तो वो करप्शन के थोड़ा सा तो दूर रहे, तो हमारी थोड़ी ना थोड़ी उसमें मदद होंगी। क्योंकि करप्शन मुझे लगता है हर जगह है, परंतु एजुकेशन और हेल्थ इस चीजों 2 में तो भी कम से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछले कोविड पीरियड में हमने देखा है हेल्थ में किस तरह का करप्शन हुआ है, और करप्शन दोनों तरफ से होता है, लेने वाला या करने वाला भी और जो कराने वाला भी। तो इसका दिमाग में जो बातें आती है तो उनको सदवृत्त देना, उनका जो आचार संहिता उनको सिखाना समाज को, तो हर समाज को जाके हम नहीं बोल सकते, पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स है उनको हम हर साल डेली, मेरा कहना है कि डेली जैसे हम कुछ एक आध गीत गवाया जाए उनसे या उनको एक लेक्चर दिया जाए रोज 10 मिनट का, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक, इंटर्नशिप तक, एमडी के भी स्टूडेंट्स को, ताकि वो समाज में जाके एक आचार संहिता उनके दिमाग में तैयार हो और सबको जो ट्रीटमेंट करे या समाज के साथ उनका जो भी संबंध आएगा उसमें वो किसी प्रकार का करप्शन ना करे। इतनी मेरी टिप्पणी है इस पे, तो मेरा सजेशन है कि जो हम आयुष को बता सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने बतलाई कि चूंकि इसको जीवन के प्रतिदिन इस्तेमाल में लाना होगा, इसलिए इसकी सीखने की शुरुआत भी और फर्स्ट ईयर से ही हो। हालांकि नर्सरी केजी से और +2 तक तो जो भी है वो सोशलाइजी सब्जेक्ट में एसएसटी के जरिए थोड़ा थोड़ा होता ही है। फिर भी क्योंकि ये स्टेप कभी 2nd ईयर, कभी 3rd ईयर, कभी 4th ईयर में सब्जेक्ट होना, मैं भी कई बार कहता था कहीं ये टॉपिक केवल डिक्शनरी का हिस्सा न बन के रह जाए। इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो किसी न किसी रूप में डे टू डे लाइफ में आए, तो आपका अच्छा सजेशन है। और अगर इनके से नहीं भी होता है तो एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर या कभी मैंने कोई स्टॉप गैप के मामले में या इवन क्लिनिकल ड्यूटीज में भी इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। हर ही कोई इन्वॉल्व, उसके लिए अलग पढ़ने वाली बात नहीं है। आपके इनपुट का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी को चाहूंगा कि उनसे भी 2 शब्द का हम थोड़ा सा विचार ले लें आज के टॉपिक पर। मैंने काफी सीनियर हैं और बड़ा अच्छा उनका इनपुट रहता है। प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी सर, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। एक ही चीज जो है जो चरक ने बताई है, तस्य मूलम अधर्मः जनपदोध्वंस में, और जनपदोध्वंस में थोड़ा जो है ये इन्फेक्टिव का आ जाता है, फिर वॉर का आ जाता है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का भी आ जाता है। तो तस्य मूलम अधर्मस्य, तो ये सभी जो है वो इसके कारण है, व्याधि के कारण है। जनपद साधारण रूप से जो सभी को अप्रोच करते हैं, तो ये इसके हिसाब से जो है ये काफी परफेक्ट टॉपिक है।
वेद व्यास जी जो बात कर रहे थे, ये स्टडी अभी मैंने एक जगह पर सुनी थी, डॉक्टर कृष्णा सर ने का लेक्चर मैंने सुना था। उन्होंने इस स्टडी की बात की थी, मोर्टेलिटी रेट और कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। मोर्टेलिटी रेट आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, जी सर, म्यूट है आप, म्यूट है आप, अनम्यूट कर लीजिए। मेरे आज कनेक्टिविटी का काफी प्रॉब्लम हो रहा है, अभी मैं जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं बाद में बात कर रहा हूँ। प्लीज ठीक गिव देयर ओपिनियंस फर्स्ट। ठीक है सर, ठीक है सर, अगर मुझे चांस मिला तो मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, अग्निहोत्री सर एंड शर्मा सर, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा परीख जी से इनवाइट करना चाहूंगा, वो अगर इस समय प्लेटफॉर्म में जुड़ी हुई हैं। हाँ यस, आप मुझे मैम आप बताएं कुछ आज के टॉपिक के बारे में, और आपका कोई व्यू पॉइंट है अगर किस एंगल से आप इसको और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। सर सभी ने बहुत अच्छा बताया है, तो उन सबकी तारीफ करूंगी, और बस मैं एक ही बात बोलूंगी कि हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, बस इतना ही कहना। तुम्हारे शांति कुंज वालों का है ही स्लोगन। हाँ जी, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर हम सब खुद अपने आप को बदल लें तो निश्चित रूप से पूरा समाज बदल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार मैम, नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब ऑलमोस्ट सबकी विचारधारा से आगे हमारे कुछ पीएचडी स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, जिनमें विनोद कुशवाहा जी है, मैं समझता हूँ केशर मैम है, भाई शायद सीनियर रेजिडेंट में है बीएचयू में, और भी वॉलंटरीली अगर कुछ अपने विचार रखना चाहें, डॉक्टर तेजेंद्र भी हमारे साथ हैं। फिर लास्टली फिर मैं डॉक्टर सीपी शर्मा को इनवाइट करूंगा, सर को, जो हमारे एक्स डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं भोपाल में, इसमें ग्वालियर में है। तो आप लोगों में से कोई अपना विचार देना चाहें इसको और कैसे प्रैक्टिकली। हाँ, मिस्टर डॉक्टर हमारे मृत्युंजय पटीदार भी हैं हमारे बीएचयू वाले, तो आप लोगों में से जल्दी वॉलंटरीली ज्वाइन कर लीजिए, जिनका वीडियो और नेटवर्क सही आ रहा है, तो क्योंकि फिर हम इन लोगों के सबके सोने का टाइम हो जाता है। तो मैं सीपी शर्मा साहब का भी विचार लेना चाहूंगा। तो केशर है सर, हाँ, कौन ज्वाइन कर रहे हैं सर? डॉक्टर आनंद आनंद कट्टी जी, प्लीज आइए, स्वागत। नमस्ते सर। आप कहेंगे तो हमारे को भी स्वागत मिलेगा जी। हाँ, थैंक यू मैम, आप कंडक्टिंग दिस कर लीजिए, डिस्टर्बेंस की आवाज आ रही है। And it was indeed 2 sessions were very enriched with the knowledge. I am in fact a very good friend of Dr. Sudhakar Reddy and a fan of his knowledge in Ayurveda. He is a master in SADAVRITTA, and it was really nice to listen to him. But regarding the topic, I have something. I think we could add some more points that we get from the Ayurveda Samhitas. The first thing, many speakers touched about the Janapada Dhamasa Vimaniya Adhyaya of Charaka Samhita. Dr. Vedavyas narrated the Samprapti of Drashtaachara, which directly gets mentioned in Janapada Dhamasa Vimaniya Adhyaya when Acharya Charaka says that it is Gaurava, the Gurutva that leads to Shrama. Shrama से आलस्य निकलता है, आलस्य से संचय होता है, संचय मेद का भी हो सकता है, धन संचय भी हो सकता है। धन संचय जब हम कहते हैं तो वो मेरे लिए होता है और मेरे परिवार के लिए भी होता है, और आई विल थिंक ऑफ माई जनरेशंस। मेरे बच्चे के लिए मैं अभी करके जाऊंगा, मेरे पोते के लिए अभी करके जाऊंगा, तो ये संचय ऐसा बढ़ता है। ऐसे ही करप्शन बढ़ती जाती है, और यहाँ से संचय से परिग्रह होता है, परिग्रह से लोभ होता है, लोभ से द्रोह होता है। ये द्रोह से आचार्य चरक में लिखा है कि अनृत वचन शुरू होता है, झूठ बोलना, और वहां से आगे जाके वी विल एंड अप विथ काम क्रोध आदि मानसिक व्याधि। जब ये मानसिक व्याधि
हो जाते हैं तो इसी को हम धारणीय वेग कहते हैं, जो उनका धारण हम नहीं कर पाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि मन और शरीर दो अलग, ये आयुर्वेद ही कहता है कि ये जब मन तप्त है, ये तप्त आज घट संबंध है। जब ये घट तप्त हो जाए तो घी भी पिघल जाता है, और जब घी पिघल गया तो सो क्या होता है, जब मन तप्त हो तो शरीर पर बाधा पड़ने ही वाली है, और इसलिए बहुत सारी शारीरिक मानसिक व्याधि आ जाती है। भ्रष्टाचार जो समाज में होता है उसका शरीर पर जो, क्योंकि हम तो, हमारा सिद्धांत तो वही है कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, जो बाहर होता है वही अंदर घटता है, जो अंदर घटता है वही बाहर भी दिखता है। तो ये फिलॉसफी जो हम चरक संहिता में देखते हैं, तो संप्राप्य भ्रष्टाचार इट्स नरेटेड देयर। और रेड्डी सर ने बहुत 2-3 बार नास्तिकों को वर्ज्य बोला, और ये हमारे संहिता में, चरक संहिता में ऐसे 2 कंटेक्स्ट में आ जाता है कि जो है ना वो उसको पापी को आपको अवॉइड करना है। और एक बात, एक जगह पर ऐसी जिक्र होती है कि पातकेभ्यो हि परम पातकः नास्तिकः। नास्तिक है ना, वो पातक से भी बहुत बड़ा पातक है, उससे आप दूर रखिए। सो ये जो पाप जो करता है ना, वो नास्तिक वही है, और नास्तिक ही होता है जो करप्शन में इन्वॉल्व होता है। और ये जो है ना, ये पाप का, अभी उस श्लोक में भी एक बार आके गया, ये पाप कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही लाइन में आचार्य चरक लिखते हैं कि पुण्य शब्दों ही विपापत्वात्। पुण्य क्या है, आप पाप नहीं करेंगे तो आप पुण्य ही कर रहे हैं। पुण्य शब्दों ही विपापत्वात्, आप पाप नहीं कर रहे हैं तो आप पुण्य ही कर रहे हैं। तो पुण्य करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पाप माफ ना करिए, हो गया है। तो ऐसी चीजें हैं, और ऐसी छोटी छोटी बातें भी है जहाँ पे न नियमम विद्यात्। अब करप्शन तो लीगली नहीं है, ये सदवृत्त ही कहता है कि आप इस संस्था में है, उस संस्था का रूल फॉलो करिए। तो ये तो आयुर्वेद में ही आता है क्या, यू आर नॉट सपोज टू वायलेट द रूल्स। और करप्शन इज नॉट ओनली गिविंग मनी, और फर्स्ट कॉमर्स तो ये क्या है, वेश्या जो है ना, प्रोस्टिट्यूशन ये है ना, यूजिंग फीमेल एज अ कमोडिटी वाज आल्सो इन पास्ट। सो देयरफॉर वी हैव परदारागमन। स्त्री के संबंध में बहुत कुछ ऐसे सदवृत्त है जो आज भी प्रस्तुत है। सो दोस आर आल्सो द थिंग्स दैट लीड टू द स्टॉपेज ऑफ करप्शन। और उसके बाद एक अंत में एक बात कहता हूँ, जो चरक संहिता सूत्र स्तंभ 11th चैप्टर की चीज है। तीसरे शनीय अध्याय नाम का अध्याय है, और 3 एषण है, और दूसरा एषण है धनेषण। और धनेषण में किस विधि से आपको धन प्राप्त करना है ये बताया गया है। कृषि, पशुपाल्य, वाणिज्य, राजोपसेवा, ये छोड़ के भी जो सज्जनों ने, जो सोसाइटी एक्सेप्टेड good ways of making money, those are the ways of making money। and अगर वो छोड़ के कोई और तरीके से आपने संपत्ति पाली है तो वो सुख, आरोग्य, ऐश्वर्य इस सीक्वेंस से आता है, तभी आपको यश मिलेगा, नहीं तो आपका यश नहीं मिलेगा। ऐसी चीजें हैं हमारे संहिता में जिन पर आज दोनों वक्ताओं ने बहुत बहुत उन पर ध्यान डाल के, हमारा इंद्रियोपक्रम ही अध्याय का नाम है जो सदवृत्त है। तो ऐसी दो चार चीजों को जो मेरे जहन में आ गए वो बताते हुए पवन शर्मा जी को, अग्निहोत्री सर को नमस्कार करते हुए यहाँ पे बुलाने के लिए सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद कट्टी जी। कमाल की बात है, पहले तो मुझे ये लगा कि आपने इन दोनों ही हमारे आज के गेस्ट स्पीकर्स को बहुत ध्यान से सुना, इनका एक एक शब्द आपने आद्योपांत सुना है, और आपने जो संचय से लेके और वेग विधान तक की जो टाइम लाइन खींची, ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी, इसमें सब आ गया। इसलिए विमान स्थान की चर्चा करते हुए, मतलब हम बड़े ध्यान से सुने, हमने फौरन नोट किया है एक एक स्टेप के, आपने संचय से लेके और उसके बाद परिग्रह बताया, लोभ बताया, द्रोह बताया, है ना, झूठ बोलना बताया, और उसके बाद वो काम चलता रहा और रात में वेग विधान की स्थिति होगी, जो
मानसिक से शारीरिक पे आ गया। यही साइकोसोमेटिक साइकोटिक बात आती है और यहीं पर रोल शुरू हो जाता है हमारे सदवृत्त का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही गहरे से आपने एनालाइज किया। मैं इस बीच एक लिबर्टी लेना चाहूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं एक लिबर्टी लेना चाहूंगा। हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर्स अभी में मौजूद हैं, तो ये सोच के कि अगर उनको एक एक मिनट में कुछ फीडबैक के तौर पर कुछ एड ऑन करना हो हमारे इतने लोगों के डिस्कशन के बाद, तो उनका स्वागत है। और लास्टली फिर हम डॉक्टर सीपी शर्मा जी के आशीर्वचन लेना चाहेंगे। तो प्रोफेसर सुधाकर रेड्डी जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Yes, sir. Yes, sir, please. Yeah. Thank you very much, sir, for all the expert opinions regarding presentation. I think that Sadhana madam and Anandikar sir, they are listened each and every point noted. And thank you very much, sir, for your comments, sir. And we could not able to reach their level because some points are missing because of short duration. It's, as Ved was told, the subject is very vast, Sadvritta. So very vast, it will need minimum of 3 hours to teach. And I like that Sadhana madam's words. With this background, I would like to say that in our college, we started in blackboard every day writing one sentence like Sadvrittas. Yeah. In all, if I go to Delhi, in all the places, there is a one Hindi word will be there. So today's Hindi word, like that, ek Hindi word. Like that way, we can implement ek Sadvritta, din daily one. Now name of Bindyat, one day. So that means that people will be seeing that one and they will be getting that one idea. So that we can prepare small quotations and we can stick in the whole college also or in the blackboard also. Thank you very much, madam, for your input. Thank you, sir. See the fun that everybody is appreciating you. On contrary, you are appreciating everybody's comment. So it itself denotes that how much senior, how much practically your address was. Now I would like to request Dr. Vedavyasji again to say some few words as a matter of feedback which you have gone through. No, so I just want to thank each and everybody, as you people have heard word to word, and particularly regarding, I appreciate the Sadhana man's thought that how we should implement it practically. That's the most important thing. We are teaching the things, we are making the students to learn, but see, at this level, we have forget Sadhvrta, isn't it? Even the students, by reaching to the final year, going out from here, they will forget all the things. If you ask even a single word from Sadhvrta, they don't know. So what we can do at the entry level itself, we have to take some initiative, and very importantly through ministry, because the initiative should be universal. It should be done everywhere. It's not localized. One person is doing, other person is not doing. And like what Reddy sir has told, that they have started an initiative. It's a very good initiative. Even in newspaper, we can see in Hindu and this all newspaper, there's a sacred space in which they used to give such quotation and all. So like this one concept is very good. Even in schools also you can see Aaj Ka Vichar like that used to present. So such concept is very good. But apart from that, we need to practicalize these things, whatever we are teaching. And if Ayush is making through, you all are senior people here, you all are very much in contact with all the people there. So if anything is possible, that will be well appreciated and very useful for Sastavrta. So once again, thanks to each and everybody. One thing. Yes, sir. Sir, I want to interrupt because Thank you, sir. Yes, sir. Yes, madam, yes, sir. Your word is welcome, madam. In anyway, second year syllabus, Sastavrta, now it is changed. So NCSM people may call Sastavrta experts, including Agnew sir, to frame to restructure the syllabus. To restructure the syllabus, that time we can give suggestion to the NCSM people that there must be some non-teaching hours are there. Non-lecture hours. In that case, we can have one small suggestion that every day there must be some Sastavrta or Sadvritta for a whole college. That way, sir, we can have one. Sir, you are raising a very important point. They are going to call all the Sastavrta faculty to make
Yes, sir. Yeah, you are underlying a very important point. As Dr. Ved Prakash also recommended the same, and he seconded the same theme which has been projected by Dr. Sadhana ma'am. You see, it is not nowhere questionable, but the fact is that even by leaving the institute, the final year student might be either ignoring or started hating all these textual parts. The fact is this: we had been a very long duration teacher, saying that because this seems as a nonsense. But Aivadan Shilasya Nitya Bedhopasevanam Chaturvadhante Ayuresya Eshobalam. You see, even bal is being increased. Ayu is being increased, the fame, Yash will be increased, but it is not been in practice. So this theme is a day-to-day life. This theme is supposed to be owned right from the student, fifth standard to +2, and then again the degree college may be BCom study, MBA, any walk of life, every citizen, and this is running in our generation. Say if a 2 or 3 generation you see back, everything was there, every good thing, do's and don'ts, they were always taught from the house itself, from the home itself, by our fathers. So this is the high time when it should be re-implemented, at least to the Ayurvedic education by our NCR ISM, and otherwise other walks of life also. So your suggestions are most valuable, though seconded by Professor Reddy and Dr. Ved Prakash ji. And now, lastly, I would like to get some benedictions from our respected ex-Deputy Director, Sir Dr. C.P. Sharma ji. Sir, if you are here and listening ourselves, please join for a few minutes and say some blessings to all our webinar dignitaries and our guest speakers. सर प्रणाम सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आज के हमारे दोनों वक्ता रेड्डी साहब और वेदव्यास वास्तव में वेदव्यास हैं, ये मैं कहूंगा। रेड्डी साहब का जो हम जब पैदा होते हैं उसके बाद से हमारा आयुर्वेद शुरू हो जाता है। हमने जब बीएमएस में एडमिशन लिया उस समय सर मेरे एक फ्रेंड कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री में एमएससी, अप्लाइड फिजिक्स में एमएससी, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। हमारा आयुर्वेद प्योरली अप्लाइड साइंस है, जहां करप्शन, सदव्रत, इन दोनों को, जहां सोशियो स्पिरिचुअल, इन 2 बातों पर मेरा फोकस रहेगा कि वास्तव में हमारा आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद वस्तुतः जहां तक मैं समझा हूं, ए डायमंड इन डस्ट। उस डायमंड को चमकाने का काम हमारे टीचर का व्यवहारिक ज्ञान उस बच्चे को सिद्धांततः डायमंड बनाएगा। डायमंड में जितनी बार तराशा जाता है जौहरी के द्वारा, उतना ज्यादा डायमंड महंगा होता जाता है। हमारे जो टीचर हैं वो हमारे डायमंड को, हमारे इस जो पृथ्वी मिट्टी में पड़ा हुआ पत्थर है उसको कितना अच्छा तराशेंगे। उसमें हम सोशल और स्पिरिचुअल व्यवस्था को समायोजित करते हुए सदव्रत का समायोजन करेंगे तो करप्शन का नाम नहीं रहेगा। क्योंकि मैं तो जॉइंट डायरेक्टर आयुष रहा, डीन रहा सर, ईसी मेंबर रहा। एक कॉलेज वाला हम लोगों को 5-5 लाख रुपए देने के लिए, सर आप तो जाके साइन कर देना, केवल साइन कर देना। हमने कि भैया तेरे पास फैकल्टी पूरी है और तेरे पास क्वालिफाइड फैकल्टी है,
सीनियर फैकल्टी हैं, हम साइन करेंगे। तो ये सब चीजें हमने हर लेवल पे, इसमें चाहे हमारा IAS, हमें कई हमारे जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी मिले, सर क्या कहते थे, हम उनने कही सर इसके लिए हमें तो 1 लाख रुपए चाहिए, हम उस काम को करके और रगड़ के और ले गए, क्योंकि जेडी स्थापना था तो पूरा लिखा पड़ी हमको करना थी। हमने ये सब ये लो, बोले गया आपने कहा था 4 लाख, वो तो 4 लाख देगा। तो कुछ लोग तो पूरा कर लेते थे और कुछ लोग कहते थे अरे यार इसमें से आधे कर दो, आधे अपने लोगों को बांट देना। जो आधे करवाता था ना वो रात को बढ़िया सोता था बिना दारू पिए, और जो पूरे ले जाता था वो दूसरे दिन कहता था आज तो मेरे को बुखार आ गया। सर विषय पर रहिए। सॉरी सर। तो मेरा ये कहना है कि जब हमारा आयुर्वेद हमारे उन पत्थरों को जो हमारे पास आ रहे हैं उनको सही तरह से उसको सदव्रत का ज्ञान कराएगा, व्यवहारिक आयुर्वेद का ज्ञान कराएगा, तो एक निश्चित ही अच्छा चिकित्सक तैयार होगा। तो हमें अप्लाइड आयुर्वेद की प्रस्तुति करना होगी। अप्लाइड आयुर्वेद की प्रस्तुति ही हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत का विकास करेगी। इसमें रेड्डी साहब ने वस्तुतः सिद्धांतिक पूरी व्यवस्था दी सदव्रत की, वेद व्यास जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी। तो हम सब लोग एक समायोजित प्रयास करें, चाहे वो कोई भी हमारा आयुर्वेद का चिकित्सक हो या आयुर्वेद में आने वाला व्यक्ति हो, चाहे हमें आयुर्वेद देने वाला व्यक्ति हो। थैंक यू। इन सब में अप्लाइड आयुर्वेद प्रस्तुत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को साधुवाद। और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सही डिवोटेड फुल्ली ज्ञानवान आयुर्वेदिक चिकित्सक तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब दूसरे विभागों में सर भ्रष्टाचार की, तो वहां भी यदि हम आयुर्वेद प्रस्तुत करेंगे, उनको आयुर्वेदी माध्यम से सही व्यवस्था देंगे, जब वो चिकित्सा तो उन्हें लगेगी साहब, जब वो गड़बड़ करेंगे ना तो उन्हें लगेगी। तो हमारा उनको ये बताना होगा परलोकेशना कि लल्ला बिट्टा तेरी संतान बिगड़ जाएगी, सॉरी सर थोड़ा, तेरी अगली पीढ़ी, हमें जो भी मिला है वो हमारे पूर्वजों के पुण्यों की वजह से मिला है। आप यदि पुण्य करोगे तो अगली भावी संतान आपकी अच्छी हो। तो हम उसको डायरेक्ट वे में यह बताएं कि हमारी गलती हमारी अगली 3 पीढ़ियां भुगतेंगी, हमारी अगली पीढ़ियां भुगतेंगी। यदि मैं अच्छा हूं तो अगला काम भी अच्छा होगा। क्यों? हमारे पूर्वजों ने जो हमें पाप किए, पुण्य किए, उसका प्रारब्ध, उसका हमें फल मिल रहा है। आयुर्वेद में बने, आयुर्वेद के डॉक्टर बने और संयोग से आयुर्वेद के मास्टर बने। ये हम मास्टरी सही करें, हम टीचिंग सही करें और उस टीचिंग से हम उसको प्योर अप्लाइड आयुर्वेद जो उसके जीवन के लिए, खुद के लिए, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर सीपी शर्मा सर, आपके इनपुट्स, आपके सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और हम ये देख पा रहे हैं कि आज विश्व भ्रष्टाचार निवारण दिवस यानी कि वर्ल्ड एंटी करप्शन डे को में अगर हम सदव्रत का पुट ला रहे हैं तो हम लोगों को कम से कम आयुर्वेद वालों को ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इसके अप्लाइड एस्पेक्ट के रूप में हम किसी भी परिस्थिति में मनसा वाचा कर्मणा ये कोशिश करें कि धन के लोभ में या किसी भी सहूलियत के लोभ में ऐसा कोई काम न करें कि जो हम जिस बात को पक्ष कर रखने के लिए हम खुद आगे आ रहे हैं और उसी का नियम हम खुद ही तोड़ रहे हैं। इसलिए चाहे वो फैकल्टी का मामला हो, चाहे किसी की मान्यता मिलने का मामला हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर गलत है तो गलत है, हमें उसको बढ़ावा नहीं देना है। और शायद अगर हम अपने घर से ही नहीं ये काम शुरू करेंगे, अपने कॉलेज अपने डिपार्टमेंट से नहीं शुरू करेंगे, तो फिर ये सब समारोह करना और विचारधारा बनाना उसका कोई प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। हमें भी वो टॉपर सर, हमें टॉपर को टॉपर ही कराना चाहिए, न मुख्यमंत्री की सिफारिश से, न हमें किसी सिफारिश। तो हर एंगल पर, हर दृष्टिकोण पर
जी हाँ जी कोई सर। क्षेत्रवाद नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, वो तो सब अंडरस्टूड इम्प्लाइड है उसके अंदर। तो अब अगर किसी की सजेशन नहीं रह जाते, समय पूरा हो गया है, काफी समय हो गया आप सबका, आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर्स का, हमारे बहुत ही रिवियर्ड, बहुत ही ऑनरेबल हमारे डिग्निटरीज का, मैडम साधना जी का, प्रोफेसर पीके गोस्वामी जी का, प्रोफेसर विष्णु प्रिया दास जी का, प्रोफेसर विष्णु शर्मा जी का, इन सबका धन्यवाद करते हुए, गेस्ट स्पीकर्स का धन्यवाद करते हुए एक बार हम पुनः प्लेटफॉर्म को प्रोफेसर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।